Samya, today's storm has uprooted many trees in our locality. That's right, Vineet. That huge tree has been broken in the middle. The broken half, leaning against the boundary wall, makes a beautiful triangle. Great, Vineet. Are you studying geometry in school these days? Yes, Samya. We are learning to construct triangles. In this lesson, you will learn to construct triangles. Objectives. At the end of this lesson, you'll be able to construct a line parallel to a given line, construct a triangle whose 3 sides are known, construct a triangle whose 2 sides and the angle between them are known, construct a triangle whose 2 angles and the side between them are known, construct a right-angled triangle whose 1 leg and hypotenuse are known. Construction of parallel lines. 2 lines cut by a transversal are said to be parallel to one another if each pair of corresponding alternate interior angles are equal. In the figure, if angle 3 is equal to angle 2 or angle 1 is equal to angle 2, line M is said to be parallel to N. We use a ruler and a compass to construct parallel lines. Draw a long line, M, and mark a point X on it. Mark a point Y some distance above it and join it with the point X. With X as center and any radius, draw an arc to cut line M at point Z and XY at V. With Y as center and same radius, draw an arc PQ to cut XY at point U. Measure VZ with a compass. With U as center and the measured radius, draw an arc to cut arc PQ at S. Join S and Y and extend it to form line N. Measure alternated interior angles SYX and YXZ. Angle SYX is equal to angle YXZ. Therefore, N is parallel to M. Construction of triangles. A triangle is a two-dimensional plane. Yes, this was taught by me that if you have 2 parallel lines, their corresponding angle and their alternate angles are always equal. Or I told you that it's vice versa is also correct, that if you talk about that if there are 2 lines and angle between them, then that is corresponding angle and alternate angle, if they are equal in that case, in that particular line, so remember those lines will become parallel. So these 2 things are absolutely vice versa of each other, and remember if lines are parallel, then corresponding angle and alternate angle will become equal. And if alternate angle and corresponding angle are equal, then lines are parallel. So we will use this concept, for making the lines parallel. Okay? And remember, in this first exercise, we have to construct the 2 parallel lines. Okay? You have to construct one parallel line to another one. And remember, we are going to use the concept of alternate angle, because as we know that alternate angles are equal, so line will become parallel. Okay? We are going to use the concept of alternate angle here. If you can see in the figure which is right in front of you, that angle 1 will be equal to angle 2 if you have 2 parallel lines LN, M and N. ठीक है? So हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हमको लाइन N दी जाएगी क्वेश्चन में, हमको लाइन N की मदद से हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि लाइन M हो सकती है. ठीक है, लाइन M हो सकती है, और you can have any other name also. But remember, we are going to use the concept of alternate angle. And what is alternate angle? That is Z-shaped angle. Okay, that is Z-shaped angle. And you can see here on the figure which is there in front of you, its angle 1 is equal to angle 2 if the lines are parallel. So now I would request everyone to please construct a line which is of 8 centimeter and give the name to that line AB.
Okay. So as I have already told you, Beta, that first of all you will draw a line. The name will be 80. The line name will be 80, and the measurement is 8 centimeter here. Okay. Now the question is telling that you have to draw a parallel line. You have to draw a parallel line. So I will for drawing the parallel, what we are doing is I will take a point anywhere. I will take a point anywhere on this line which I have just now drawn. So suppose I am taking the point here that is named as suppose C. Okay, I am taking the point as point C. Now I want everyone to please do it along with me. Yes. So what I have done is here that on the line AB, I took a point C and then I took a point D which is in some distance with C and D. Okay, there should be some distance between C and D. You can take this point anywhere. You can take this point anywhere. Now what I will do, I will take the help of scale and I will join this line. I have joined this line. Now I want everyone to do it. With x as center and any radius, draw an arc to cut line M at point Z and xy at V. With y as center and same radius, draw an arc PQ to cut xy at point U. See, what we are going to do, we will work on these 2 points. एक होगा हमारा point C और एक होगा हमारा point D. Remember, we are working on these 2 points. C point पर और D point पर हम work करेंगे. And remember, we will only use compass now. We don't have any other thing to use now. We will only use compass. Now what we are going to do, you will just spread your compass, not too much, not so less. ठीक है? आप compass को open करेंगे और point C पर अपना compass रखेंगे and after taking your compass pointer here, you will make an arc here like this. And remember this same radius without changing this radius, just यही same काम जो आपने इधर भी किया है वो just उसके opposite direction में यहाँ पे करेंगे. Same direction में नहीं होना चाहिए था. Opposite direction में करेंगे. Now I will be telling you why you are taking opposite direction. D point पे रखिए. Same वैसा ही आएगा ऊपर कट कर दो. Once again repeating, सबसे पहले आप पॉइंट सी पर रखेंगे. सबसे पहले पॉइंट सी पर अपने कंपास को रखेंगे और जो थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे कंपास को और यहाँ पर एक मार्क कट करेंगे. ठीक है, बिना किसी मेजरमेंट के. सेम वही प्रोसेस बिना पोजीशन को चेंज किए आप डी पॉइंट पे करेंगे अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में. रिमेंबर ये एक साइन इधर एक इधर होगा तो एक उसके जस्ट ऑपोजिट होगा. नाउ आई एम टेलिंग यू व्हाई यू आर टेकिंग ऑपोजिट. Reason behind that you are trying to draw alternate angle and you are knowing alternate angles are in the shape of Z. तो एक एंगल अगर इधर बनता है तो एक एंगल दूसरी तरफ बनता है. ठीक है, so you are trying to make alternate angle only, that is why you are trying to take one this side so another that side. Fine. So now I hope till here everybody has drawn. Now what you will do, you will just take your compass and compass को जब आप ओपन करते हो तो एक तरफ पे पेंसिल होती है एक तरफ पे पॉइंटर होता है. तो आप क्या करेंगे अपने कंपास से स्प्रेड करेंगे और इस तरीके से ओपन करके देखेंगे कि इन दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है. अब आप अपने कंपास को ओपन करेंगे. अपने कंपास को आप ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद देखेंगे कितना मेजरमेंट इन दोनों के बीच में है. जस्ट दीज 2 पॉइंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको मेजर करना है. हाउ मच इट इज कमिंग, हाउ मच इट इज कमिंग, यू हैव टू टेक द मेजरमेंट हियर. नाउ same amount.
So what we are trying to do, we are opening the compass and we are placing here and we are checking that how much measure of this angle here is. ठीक है, अब जैसे हम इसको ओपन कर लेंगे तो हमको ये मेजरमेंट मिल जाएगा. उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर यही सेम पॉइंटर जो आपने यहाँ पे रखा था वो सेम पॉइंटर हम यहाँ रखेंगे. वही सेम पॉइंटर हम यहाँ रखेंगे जहाँ पर मैंने अभी मार्क किया है. और रखने के बाद उसी पॉइंटर की हेल्प से उतना ही मेजरमेंट जो बेस एंगल का था वो हम यहाँ कहीं पर उसको आज कट कर देते हैं. You will cut the arc here only. It will come like that. Do it faster. So now what we are doing is बेटा, जैसे ही आप जब इस पे रख करके इसको मार्क करोगे तो आपको एक x मिल जाएगा. और याद रखो जब भी कभी फेयर पॉइंट की बात करते हैं तो हमें फेयर पॉइंट हमेशा x की जगह पर मिलता है ना, जहां पर इस तरीके से आप देखोगे. ठीक है, नाउ टेक द हेल्प ऑफ द स्केल, टेक द हेल्प ऑफ द स्केल एंड just draw a line which is passing these 2 points. Draw a line which is passing these 2 points. Draw a line which is passing through these 2 points. Okay, and give the name, any name you can give. Let's say M, let's say N, let's say XY, let's say PQ, any of the name. Remember always that if your diagram is going correct, so the line will come parallel only beta. और अगर आपने कहीं पर भी गलती की है तो आपकी लाइन पैरेलल नहीं आएगी. और अगर आपकी लाइन पैरेलल आ रही है तो आपको खुद ही समझ जाना चाहिए कि मैम वी आर डूइंग एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, सो हियर आई मूव फॉरवर्ड नाउ. Okay. Now in the previous condition which we did, it was given a random point. हमने कहीं पर भी point ले लिया था. But अगर suppose question में ऐसा दिया जाए कि there is a line is suppose L, हमने ले लिया point line L, एक point दिया हुआ है which is A, which is given in the question that it is a point A, and it is saying that you have to take a point C and उससे line parallel draw करनी है. एंड ये पॉइंट C जो है A से 4 मीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए सपोज, बिकॉज यहाँ पर तो मैं रैंडम ले लिया बेटा. बट अगर एग्जाम में ऐसा आता है कि देयर शुड बी सम डिस्टेंस बिटवीन देम, सो तब आप क्या करेंगे, देयर इज नथिंग टू डू इन मोर, यू हैव टू जस्ट टेक द हेल्प ऑफ स्केल. और आपको इन दोनों के बीच में जो पॉइंट में जो डिफरेंस है वो 4 सेंटीमीटर पे ले लेना है बस. मतलब आप स्केल रखोगे, स्केल से मेजर करोगे, स्केल से मेजर करने के बाद इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ जाएगा. आपने अच्छे से मैंने स्केल लिया, स्केल के बीच में स्केल से मेजर करके 4 सेंटीमीटर में कहीं पर एक पॉइंट ले लिया. ठीक है, सो आई टुक इट सपोज C हियर. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट जॉइन विद द हेल्प ऑफ स्केल. आई विल जॉइन विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड देन आई विल डू द सेम प्रोसेस एज आई हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन. आफ्टर जॉइनिंग I take the compass, and after taking the compass, I will do the arc here. The same what measurement I took it here, the same arc I will cut it from here only. ठीक है? After doing the same thing, I will open my compass. I will open and I measure it how much it is coming. How much it is coming, and after measuring it, I will place it here. I will place it here, and I will put an arc here. ठीक है, यहाँ पर रखकर याद रखना बेटा. कई बच्चे यहाँ रख के करते हैं इसलिए उनको आंसर नहीं मिलता. याद रखिए हमको यहाँ लेना है बेटा. एंड रिमेंबर आफ्टर प्लेसिंग द पॉइंट हियर, द मिडिल पॉइंट ऑफ कंपास हियर, यू विल विद द हेल्प ऑफ पेंसिल यू विल आर्क द आर्क इन दिस लाइन. और यही कहीं पे कट होगा. एंड द पॉइंट व्हिच यू विल गेट इट, इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे और डार्क करने के बाद हम उससे एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे. And that line will be a parallel line to that previous line. उसको आप नाम दे देना जो भी क्वेश्चन में दिया होगा. If question is given M, so you give the name M. If it is given AB, you give the name AB. So just depending on the question what is asked here,